संयुक्त राष्ट्र क्लाइमेट एक्शन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से ठीक पहले 16 साल के एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने अपने भाषण से लोगों को झकझोर कर रख दिया। जी हां फ्रेंड्स, स्वीडन की 16 साल की एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय क्लाइमेट समिट के दौरान सोमवार को अपने भाषण से सबको हिलाकर रख दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित दुनिया के तमाम बड़े नेताओं को झकझोरते हुए ग्रेटा रो पड़ी। ग्रेटा ने अपने भाषण में कहा कि आपने हमारे सपने और आपने हमारे बचपन को अपने खोखले शब्दों से छीना है। हालांकि मैं अभी भाग्यशाली हूं, लेकिन लोग झेल रहे हैं, लोग मर रहे हैं और पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है। अपने संबोधन के दौरान ग्रेटा भावुक हो गई और सिसकते हुए यहां तक कह डाला कि आपने हमें असफल कर दिया है। युवा समझते हैं कि आपने उन्हें छला है। हम युवाओं की आंखें आप लोगों पर हैं और अगर आपने हमें फिर विफल किया तो हम आप लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ने कहा कि हम सामूहिक रूप से विलुप्ति के कगार पर हैं और आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इमेजिनेटिव स्टोरी के बारे में बातें कर रहे हैं। आपने ऐसा करने की आखिर हिम्मत कैसे की? ग्रेटा ने कहा कि पूरी दुनिया जाग चुकी है और आप यहां इसी वक्त लाइन खींचने के लिए तैयार हो जाइए और आपको इसी वक्त लाइन खींचनी होगी। ग्रेटा ने दुनिया भर के बच्चों और आज की युवा पीढ़ी की आवाज को सामने रखते हुए युवाओं को समझ में आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर आपने उनको सिर्फ छला है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो युवा पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। ग्रेटा के इस झकझोर देने वाले भाषण को आइए हम भी आपको दिखलाते हैं उन्होंने यूएन में किस कदर अपनी आवाज का और अपनी जज्बात का और दुनिया के लिए किस तरीके से उन्होंने जोर शोर से सारे नेताओं को लताड़ा है। देखते हैं इस वीडियो में। This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 degrees and the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control. 50% may be acceptable to you, but those numbers do not include tipping points, most feedback loops, additional warming hidden by toxic air pollution, or the aspects of equity and climate justice. They also rely on my generation sucking hundreds of billions of tons of your CO2 out of the air with technologies that barely exist. So a 50% risk is simply not acceptable to us, we who have to live with the consequences. To have a 67% chance of staying below a 1.5 degrees of global temperature rise, the best odds given by the IPCC, the world had 420 gigatons of CO2 left to emit back on January 1st, 2018. Today, that figure is already down to less than 350 gigatons.
How dare you pretend that this can be solved with just business as usual and some technical solutions? With today's emissions levels, that remaining CO2 budget will be entirely gone within less than 8.5 years. There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable and you are still not mature enough to tell it like it is. You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Thank you. कीजिए सब्सक्राइब हमारे YouTube चैनल को, साथ ही Facebook, Twitter, Instagram, Google+ पर भी फॉलो करें। LinkedIn पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।